Next type of data structure is stack data structure. For example, I have to store this data. This is my data, okay? And when you are organizing a data, the way you are organizing a data, in what manner, what fashion you are organizing a data is known as data structure. Okay, so in array, we organize this data like this in a contiguous memory, in a sequence 10 and then 20, then 30 and then 40. So these are my data and I'll store this data like this in a contiguous memory block. This is known as array data structure. Now, in case of stack data structure, I will store this data like this. First data and then I'll insert another data on top of on top of other. Okay, so now 30th data like this, then 40th data like this. So in stack, we insert the data on top of the other. Okay. Now suppose I want to delete a data from this stack, then I can delete the data only from the top. Okay. Insertion and deletion both will take place at the top of the stack. Like if I want to delete some data onto this from this stack, I cannot delete a particular data like this. Okay, I cannot delete like this. I can only delete a data from the top. That means I can delete 40 only. The data that is on the top, only that data will be deleted. Okay, so that means the data that goes last will delete first. That means last in, this is the last data I have inserted in the stack. So last in, first out. Okay, last in and first out. I'll show you once again. The data I have inserted first is 10. Okay, then I'll put 20 on top of this like a stack, then 30 and then 40. So 40th data is the last data. For the data that goes last will go out first. So that means last in, insertion जिसका last में हुआ है, last in, first out. So stack stores the data element and follows a particular order. That order is known as last in, first out. Okay, LIFO इसको बोलते हैं LIFO, last in, first out. Stack follows this order. This type of arrangement of data structure is known as stack data structure, and insertion in stack is known as push. Okay, push means you are inserting element, inserting new element. Okay, and when I delete some data from the top, obviously from the top only, that is known as pop. Pop means deleting a data element, कुछ भी बोल सकते हो. Then if I want to see the top data, if I want to see the top of the data, okay, that is known as peek. Peek means just read top of the data. That means stack के सबसे ऊपर कौन सा डेटा पड़ा है वो हमें किससे पता चले, उसको क्या बोलते हैं, पीक. अगर मैं बोलती हूँ पीक, दैट मीन्स 40. ओके, अगर मैंने 40 डिलीट कर दिया देन पीक इज 30. अगर मैंने 30 डिलीट कर दिया पीक इज 20. सो जो भी डेटा आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे पड़ा है दैट इज पीक, राइट. सो यू आर इंसर्टिंग अ डेटा एट वन पॉइंट. आप एक ही पॉइंट से इंसर्शन कर रहे हो और इसी पॉइंट से आप डिलीशन कर रहे हो. ओके, आप अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को इंसर्ट करना है 10 के बाद 50, तो आई कैन नॉट डू इट. मैं 10 के बाद 50 बीच में से इंसर्ट नहीं कर सकती. आई कैन ओनली इंसर्ट फ्रॉम द ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड डिलीट ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक ओनली. जैसे एरे के केस में आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते थे, किसी भी पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते थे. इन केस ऑफ एरे आप स्टैक में ऐसा नहीं कर सकते. स्टैक में आप एक ही एंड से इंसर्शन करते हो और एक ही एंड से डिलीशन करते हो फ्रॉम द टॉप ओनली, और उस एंड को क्या बोलते हैं, टॉप. ठीक है, इंसर्शन मीन्स पुश, डिलीशन मीन्स पॉप एंड पीक मीन्स यू आर रीडिंग द टॉप एलिमेंट. टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है ये अगर मैं बोलती हूँ पीक. ओके, definition is it is a data structure which stores the data in a particular order and that order is LIFO, last in first out. ओके, जो लास्ट में डेटा इंसर्ट हुआ है वही पहले आउट होगा, डिलीट होगा.
एप्लीकेशंस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आर योर कॉल लॉग्स, जो भी कॉल आपको आते हैं, मिस्ड कॉल्स, रिसीव्ड कॉल्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेट एंड टाइम दे आर स्टोरिंग लाइक अ स्टैक. ओके, देन योर मैसेज लॉग्स, जो भी ओल्डर मैसेजेस होते हैं वो नीचे होते हैं और जो न्यूअर मैसेजेस होते हैं वो टॉप पे होते हैं. ईमेल स्टोर, फोटोज इन योर गैलरीज. These are the advantages. It helps to manage the data in LIFO order. Insertion and deletion is easy as compared to array, because insertion करते हैं जब हम array में we have to shift the data onto the right side. Then in deletion we have to shift the data on the left side. But in this case, stack के case में insertion and deletion is very easy because you are inserting and deleting from one end only. That end is top. Okay, insertion भी top से, deletion भी top से. Then disadvantages is we can't able to insert the data and delete a data at a specific position. Like मैंने बोला जैसे array में आप किसी specific position पे insertion कर सकते थे, लेकिन in case of stack if I want to insert a data from in the middle, अगर मैं middle में data को insert करना चाहूँ तो वो हम नहीं कर सकते in case of stack. So that is the disadvantage. So this is the brief introduction about stack data structure. In the next video I'll discuss various operations and implementation of stack. So I hope ये आपको समझ आया होगा. Thank you so much everyone.